Good morning to all my dear students in the business studies. Now today we are starting with our next chapter, that is emerging modes of business. After studying in the earlier chapter, that is business services, now you have to study number of emerging modes. Emerging means developing mode. Okay, so number of developments are becoming, or number of developments that the business sector is gaining, okay, in the various types of modes, and all those modes you can see on online basis. ओके, सो जो ऑनलाइन बिजनेस होता है बाय यूजिंग इंटरनेट सर्विसेज, वॉट एवर द बिजनेस मंस आर रनिंग देयर एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज वॉट नंबर ऑफ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. ओके, सो जो कुछ भी बिजनेस सर्विसेज वॉट एवर वी हैव स्टडी, all those business services now we are getting on online basis, that is by using internet we are getting all those services. Okay, we can make the contact, or we can make the connection with the number of businessmen, customers, and all over the economy of the market. Okay, so this is what emerging modes of business. See the meaning. The term e-business, that is electronic business, is derived from the term email or e-commerce. Okay, e-business is the large concept and e-commerce is a smaller concept. Okay, see, e-business क्यों large है? Because e-business consists of all the production, procurement, manufacturing, marketing, selling activities, and research and development activity, financing activity, management activity. तो जो business करने के लिए whatever the activities are needed, but being a corporation, whatever the activities are needed, all those activities can be done by e-business. Whereas e-commerce में क्या होता है? Only and only buying and selling of goods and services. इज दैट क्लियर? अगर मैं घर पे बैठे बैठे भी कुछ भी सेल कर रही हूँ ऑनलाइन, सो दैट विल कवर्ड अंडर ई कॉमर्स. ओके, लेकिन अगर मेरा पूरा प्रोडक्शन का एक फैक्ट्री है वेयर इन आई एम डूइंग एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, पैकेजिंग ऑफ ऑल दोज गुड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और नए नए तरीके ढूंढ रही हूँ प्रोडक्ट्स बनाने के, सो ऑल दोज थिंग्स विल कवर्ड अंडर ई बिजनेस. इज दैट क्लियर? See, e-business or electronic business is administration of conducting business via internet. Administration means what? All those things, factory में जो goods बनता है, so that production, selling, marketing, procurement, all those activities via internet. So internet through all the ये activities होती है. This is what e-business or electronic business. This would include the buying and selling of goods or services along with providing technical और कस्टमर सपोर्ट थ्रू द इंटरनेट. कस्टमर सपोर्ट भी इंटरनेट से ही मिलेगा. व्हाट डज इट मीन? आफ्टर सेल सर्विस, वॉट एवर द नीडेड by the customer, so those services will be given by that company. Okay, only you have to book your complaint. Okay, so this is what all those things happen in e-business. Okay, so the support system is included in e-business, but in e-commerce only buying and selling of goods will be done. नाउ एक्टिविटी एक दिया है आपको, विजिट वेबसाइट्स विच आर सेलिंग गुड्स थ्रू ऑनलाइन मोड, दैट इज इन कैटेगरी ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस कैटेगरी में कोई भी वेबसाइट आप ढूंढ सकते हो. यू कैन सी मीशो ऐप, you can see Flipkart, Amazon, OLX. Okay, so GoIbibo, then MakeMyTrip.com. So all these are what they are doing, either they are selling goods or they are providing MakeMyTrip. MakeMyTrip में वो goods sell करते हैं? No, they are providing services but on online basis. ओके, सम पीपल यूज द टर्म ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स इंटरचेंजेबली, मतलब सेम है वो, बोथ वन एंड सेम थिंग है, लेकिन नहीं, बट दे आर नॉट सिनोनिमस. वो एक नहीं है. ई कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन. ऑनलाइन बाइंग सेलिंग होता है ई कॉमर्स में, वाइल ई बिजनेस इनकम्पासेस ऑल बिजनेस कंडक्टेड ऑनलाइन, दैट इज ई कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ ई बिजनेस. ई कॉमर्स क्या है? सिर्फ एक ब्रांच है, वेयर एज ई बिजनेस क्या है? एक बड़ा सा पेड़ है, ट्री है. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, वी विल स्टडी स्कोप ऑफ ई बिजनेस. ये ई बिजनेस में एग्जैक्टली और भी होता क्या क्या है. सो दिस इज व्हाट द स्कोप.
Okay, see, basically this e-business is completely on online basis business. Okay, online selling, online shopping, जो कुछ भी करते हैं, all those things includes in e-business. Okay, see, it also includes online stock transactions and the use of softwares also. Okay, जो number of softwares apps जो कुछ भी आप use करते हो, that thing also covered under e-business. In India, till now, business is managed through traditional method. Now many businesses are becoming aware of the advantage of e-business and are incorporating this into their strategies. Okay, traditional level type का business मतलब क्या होता है? In a physical manner, the buyer will be there physically available in the market, available in the shop, and whatever the goods he want, he will physically check out all those goods and he will buy it. ओके, सो दिस इज़ वॉट द ट्रेडिशनल मेथड. बट नाउ आपको घर बैठे भी शॉपिंग करके मिलेगा. घर बैठे यू कैन फिल्टर योर डेटा कि आपको किस किस टाइप के कौन से गुड्स चाहिए, एट व्हाट प्राइस, ओके, विद इन हाउ मेनी डेज, एंड कैशबैक फैसिलिटी, सॉरी, रिटर्न फैसिलिटी होगी या नहीं होगी, एक्सचेंज फैसिलिटी इज देयर और नॉट. Okay, all those things you can see the number of offers also. So number of businessmen are becoming aware to provide such type of services to their customer, वो भी घर बैठे. Okay, so this is what the advantage of e-business. It also helps in better communication between business house and makes purchasing easier for large organization. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या मिलता है, एक अच्छे से मौका मिलता है. दे हैव नो नीड टू सेट अप देयर ओन शोरूम इन द मार्केट. ओके, इतना बड़ा रेंट देना, उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करो, फिक्स्ड एसेट्स परचेस करो. दे हैव नो नीड टू इन्वेस्ट that much of capital. And see, there are various business and payment apps popularly used in e-business. For example, phone pay, Google Pay, Swiggy, Ola, etc. Okay, wherein you can simply pay your amount, your bill, and you can get your product at your home. Okay, and at the same time, whatever the services you need, at your doorstep you will get all those services like Ola, Swiggy, etc. Okay, so this is what the vast scope for e-business. Okay, e-business इतना बड़े तादाद में spread होता जा रहा है. And now e-business के there are various modes like B2B, that is business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer, business to administration, and consumer to administration. What does it mean? This is what the network, and viewed from this perspective, a firm electronic transactions and network can be visualized as extending into 6 directions. See, all these 6 directions. Okay, but we can extend our business by having all these 6 directions only because of electronic transition, network, strong network, high bandwidth. Okay, number of firms who are taking initiative to start their e-business, etc. Now what is B2B? That is business to business. What does it mean? E-business is starting e-business which has been started in between two firm, in between two businessmen. That is what B2B. What does it mean? Buyer is also one businessman and seller is also one businessman or business entity. Okay, who involve themselves in a business activity for the buying and selling of either goods and services. Okay, so what does it mean? There is one businessman who is buying something from another businessman, so of course it would be in a bulk quantity. ओके, दो होलसेलर के बीच में, दैट इज और एल्स इफ एनी फैक्ट्री इज डीलिंग विथ होलसेलर. ओके, फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग बल्क क्वांटिटी गुड्स एंड selling it to the number of wholesalers. So this is what business to business. Wholesaler is also businessman and factory owner is also businessman. Okay, in this form of buyer and seller are both business entities and do not involve individual consumers. ओके, अगर अकेला अकेला सिंगल पर्सन को, ये इंडिविजुअल पर्सन को who wants to take the services or goods in a small quantity, they will not be involved over here. Here both the parties involved in e-commerce transactions are business firm and hence the name B2B, that is business to business. Okay, and the transactions will be on a
platform. E-platform means what? On an electronic mode based on network, computer networks. Okay, so this is what business to business. Next is transactions between business firm comes under this category. Business firm interact with each other for a variety of services. This includes supplying ancillary parts, components to manufacturers, providing value-added services like catering, and also providing manpower also. Okay, there are number of services are available. Service providers are available who provides their logistics services, that is transportation service. Okay, then number of service providers provide manpower. For example, किसी बिल्डिंग को, बड़ी वाली बिल्डिंग को, कॉम्प्लेक्स को अगर there is a need of security guard, number of security guard, so what they will do is they will simply contact to the service provider. That service provider will provide you manpower facility in the form of security guard. Okay, same as like catering service also. Okay, what simply one person or that customer have to do, businessman has to do, they only need to provide information or regarding the order of the quantity of lunch and dinner. Okay, so companies क्या करती है, companies tie up करके रखती है with the different caterers. They provide lunch and dinner for their employees. Yes or no? So this is what business to business tie up, which is held on the basis of e-business, on the basis of network. Next is business to consumer. Now business to consumer means what? See, customer identifies a need and searches for the product or service to satisfy the need. What does it mean? Suppose अगर आप जाओ किसी फ्लिपकार्ट या अमेजोन की वेबसाइट पे, सो देयर यू विल गेट n number of variety of products, categories, and at the same time you can filter the data based on the price, colors, size, etc. Okay, so to satisfy the needs of the customer, there are variety of product searches are available. Customers select a vendor and negotiate a price. Okay, कभी कभी price negotiate भी किया जाता है and sometimes they will disclose the price. Now you only have to choose that particular range of price only. Okay, so in that price you will get the product. Customer receive the product or services, makes payment, get service and warranty claim also. Okay, तो यहाँ पर ये फेस टू फेस मिलना होता है कस्टमर का या बिजनेसमैन का? नो, ओनली ऑन द मोबाइल डेटा, only based on your mobile network or internet network. You can simply visit their website and get whatever the goods you want, and at the same time you can make the payment and take the warranty claims also. As the name implies, B2C transactions have business firms at one end and its customer at other end. मतलब क्या, मैं मेरे घर पे बैठे बैठे भी बिजनेसमैन से क्या कर सकती हूँ, गुड्स मंगवा सकती हूँ. Amazon and Flipkart is the best example for B2C e-business. The transactions under B2C are between business and firms and consumer. Firms use their sites for a range of marketing activities. This includes promotion, product information, reviews about the product, service and delivery of the product at the doorstep. Yes or no? Amazon पे ये सब possible है, Flipkart के ये सब possible है. Yes, at your doorstep you will get home delivery of your product. If you don't want to pay cash at the time of purchasing that product, so at the time of delivery also you can choose the option of cash on delivery. Okay, so and at the same time if you want to buy one bedsheet, so what you will do is you will simply check out the reviews also. So reviews are also available over there कि कितने कितने customers ने क्या क्या review डाले. There are stars are also available. Okay, कितने stars मिले हैं product के लिए. The cost of product and the service is kept low through this method and the speed of the transaction is also faster. येस ऑफ कोर्स, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे सो बहुत सारे ऐसे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी आपको कम दाम में मिल सकते हैं. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वाई? बिकॉज नंबर ऑफ मिडलमैन इन द मार्केट हैज़ बीन रिमूव्ड और इरेडिकेटेड ड्यू टू सच ई बिजनेस. जो कुछ भी आप रेफ्रिजरेटर परचेस करो, वॉशिंग मशीन परचेस करो, यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम warehouse of that company or from the factory layout. फैक्ट्री लेआउट से सीधा आपके घर तक पहुंच जाएगा. सो यू हैव नो नीड टू टेक इट फ्रॉम होलसेलर और रिटेलर इन द मार्केट. एग्जाम्पल इज वेबसाइट ऑफ flipkart.com एंड एट द सेम टाइम अमेजोन भी है, मीशो है,
etc. Next is consumer to business. Now consumer to business means what? Here consumer will provide something to businessman. Okay, see, in this electronic transaction the consumer request a specific service from business. Business से एक specific service we will expect, okay, to get it in a doorstep, up to our doorstep. So example is फास्ट फूड में क्या क्या आता है, जैसे कि पिज़्ज़ा हट हो गया, ओके, स्विगी हो गया, देन ओला उबेर हो गया, जो क्या करते हैं, वी ऑल आर कंज्यूमर, वी रिक्वेस्ट फॉर द स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम दैट बिजनेस. Consumer to business is a growing area where the consumer requests a specific service from the business. It enables buyer to quote their own price for a specific goods or services. अगर आप वो ऐप पर जाओगे, so you will get all the filtered data, or you can also put your own filtration, and based on that आपको ऑटो चाहिए, ऑटो, मिनी वैन चाहिए, माइक्रो मिनी वैन चाहिए, स्मॉल वैन और बिग वैन, whatever all those things will be available over there. Okay, a consumer post his request from which destination up to which destination, how many kilometers are there. So all based on that budget you can only select your cab on online basis, and companies reviews the customers requirement and bids out the project. bid करना मतलब क्या? प्राइस डिसाइड करना, and that price will be decided by company. Only you have to select your filtered data. For example, pest control service, taxi service, that is cab services, doorstep food delivery, etc. Okay, all these are consumer to business type of e-business services. Next is consumer to consumer. Now consumer to consumer means what? अगर सपोज मेरे पास पुराना कुछ फर्नीचर पड़ा है, आई डोंट वांट टू सेल आउट इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे शायद कम दाम में मिलेगा. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेल इट टू द नीडी पीपल. ओके, नीडी पीपल मीन्स नीडी कंज्यूमर हु वांट्स टू बाय इट. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली सेल इट इनटू OLX. ओके, तो OLX पे मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा पुराना सामान भी बेच सकती हूँ, एंड एट द सेम टाइम किसी की मुझे सेकंड हैंड कार चाहिए, सो आई कैन परचेस इट बाय OLX. ओके, सी इट, एंड इवन एट द सेम टाइम अगर मुझे मेरा घर भी रेंट पर देना हो, सो व्हाट आई कैन डू इज़ एजेंट को पैसा देने से अच्छा आई कैन सिंपली पोस्ट the latest updated photos and all the related things regarding my home to that particular website, and that particular website will provide this information to the needy customer. Okay, so it facilitates the easy way or easy option to provide my home on a rental basis. Okay, it facilitates the online transactions of goods or services between two people, consumer to consumer, because यहाँ पर दोनों consumer है. I am not a businessman. अगर मैं मेरा घर रेंट पे देती हूँ, what it does not mean that I am businessman. If I am purchasing one car from OLX, okay, and somebody is selling his second hand car on OLX, so it does not mean that they both are businessmen. They both are actually consumer. Okay, so consumer to consumer involves electronically facilitated transactions between consumers through some third party. Okay, and this third party is on electronic basis, e-business basis. They are having their website. Okay, a common consumer post an item for sale and other consumer bid to purchase it. Okay, bid करना मतलब क्या? Purchase करने के लिए बोली लगाना या फिर प्राइस बताना, like that. Okay, buying price बताना. The sites are only intermediaries. साइट्स मतलब क्या? वेबसाइट्स इंटरमीडियरीज रहते हैं. वेबसाइट पे ही हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करते हैं जस्ट टू मैच द कंज्यूमर्स. ओके, एंड एट द सेम टाइम ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल बी देयर. The internet allows a lot of space for consumer group to be formed. This forum are very interactive. Redressal of complaints is also possible through such group. For example, eBay. ओके, इधर यहाँ पर उन्होंने eBay भी दिया है. देन यू कैन सी OLX. ओके, एंड देयर आर नंबर ऑफ quicker.com. okay, so all these are number of websites wherein consumer to consumer transactions can be done. Moving towards next,
business to administration. Now administration is nothing but some of the government services, okay, public services which has been provided by government. This part of e-commerce encompasses all transactions conducted online between business and public administration. मतलब business to government कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. कंपनीज रजिस्ट्रेशंस कैन बी डन इन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एंड एट द सेम टाइम इफ कंपनी वांट्स टू टेक or wants to start their business, and at the same time they want to take some certificates like certificate of incorporation, then memorandum of association, articles of association. so ये important documents है for the formation of company. कंपनी फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे, बट उसके लिए कुछ ना कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कागजात लगते हैं. नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर, ओके, विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज. पेमेंट ऑफ टैक्सेस. टैक्स पेमेंट आप कहाँ पर करोगे, टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. गेटिंग परमिट्स. अगर आपको कुछ होटल शुरू करना हो, या फिर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, सो यू नीड टू टेक परमिट, okay, so all those permit can be given by government only. so businessman will approach to the administration for getting some of the things to start their business. so this can also be done through internet, through e-business. नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. एंड हियर ऑल्सो अगर आपको टैक्स पे करना हो, सो देर इज़ वन वेबसाइट, देर इज़ वन पोर्टल इज़ अवेलेबल ओवर देयर, ओके. वो पोर्टल पे अगर आप जाओगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड भी क्रिएट करके रखोगे, सो यू कैन सिंपली एट योर डोर स्टेप, घर पे बैठे बैठे ही आप क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर सकते हो, ओके. सो दिस इज़ वॉट बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे बिजनेस को भी ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने की, सेम वैसे हमारे जैसे इंडिविजुअल्स ऑल्सो आर इन अ नीड टू मेक सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, एक्सेट्रा, गेटिंग पासपोर्ट, ऑल दिस थिंग्स, लाइसेंसेस. तो ये सारी चीज़ें हम घर बैठे कर सकते हैं. अगर मेरा पैन कार्ड कहीं गुम हो गया, सो मुझे कहीं पर घूमने की ज़रूरत नहीं. एट माई डोर स्टेप, इफ़ आई एम हैविंग इंटरनेट एंड आई एम हैविंग द फैसिलिटी ऑफ ऑल दोज बैंडविड्थ, सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सिंपली गो विद द दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट वेबसाइट, और वहाँ पर जाकर मैं अप्लाई कर दूँगी फॉर माई आधार कार्ड और पैन कार्ड, सो आई विल गेट इट. Okay, so the consumer to administration model encompasses all electronic transactions conducted between individuals and public administration. Yes, of course, MSCB provides electricity. So electricity bill also you can pay by sitting at your home. येस और नो. गैस बिल, गैस का भी जो कुछ भी मिलता है आपको, गैस सिलेंडर, तो उसका भी बिल आप घर पे बैठे बैठे भी भर सकते हो. दे ऑल्सो आर हैविंग देयर ओन वेबसाइट, ओके. e-banking is also one process wherein number of government banks are having their portal for internet banking, okay. so that is also covered under consumer to administration. Is that clear? So here we have completed with the scope of e-business, okay. so all of you just note down all these things in your notebook. Here we are done for the day. Thank you.